Good morning, everyone. Thank you all for joining. Yeah, so guys, today again the news on tourism. So we have a lot of many of you have written this news on this. Probably what we have just give. If I want to just give you a snapshot of this, they have said that there is a shortfall of around 3.8 lakhs hotels in India, branded hotels. The total hotels which are available is around, say, the India currently has an inventory of 20 lakhs, whereas the bulk of them, 16 lakh, is unbranded, and just 4 lakh hotels are 4 stars and 5 stars. So that's a big mismatch. And as we are seeing that all the luxury hotels, 4 star, 5 star, let's say EIH, IHCL, your then SAMHI Hotels. Yesterday, I sent you the initiating report. So these companies are coming up. We are also looking at the sector. So now it's been approximate 3 months. Every day, some of the other things are coming on the tourism. So a sector to look at. I think this should be a go through sectors if you go for an interview. But for that, you need to have all the news that is coming up. So I will rather focus, if you're when you're writing a newsletter, probably have this your tourism newsletter with you, because it might help you when you go for interviews. So Aniket has written on this. Aniket, will you go ahead with this? Ashutosh, you can then follow up. I think both have written the same thing. Okay. Yeah, sir. Okay. Yeah, Aniket. Aniket, you there? Yeah, so one second, open. Yeah, so I've written on the hospitality sector. So, as correctly told by sir, like there is a mismatch between the demand and the supply, which is outpacing the pricing power for them, like the hotel sector. So, out of nearly 20 lakh hotels, about 16 lakh are unbranded. So, there is a shortfall of the branded hotels, which is in the 3 to 5 star segment of around 4 lakh, to be specific in the number, which is indicating like there is a demand and the outpacing supply. This limits, on the other end, if we see, this limits the travelers, like about 30 million on the data specific, like about 30 million Indians traveled abroad because there was a shortfall in the room supply. And about 10 million foreign tourists also didn't visited, which is indicating like there is a tourism leakage in our on the supply end, which is affecting a lot of sectors and the spending. And for FY26, the outlook is like the demand will be 8 to 10% on a YOY basis, and the supply will rise 5 to 6%. So this imbalance will help the hotel sector on the occupancy end, which will rise around 70 to 75%. ARR will be supported, which will grow to 8.2 thousand to 8.5 thousand, and this will also rise to their margin expansions. If we see the branded hotels, like around 20,000 rooms are expected in FY25 and 26. To mismanage this gap, our hotel stocks are coming like IHCL, Lemon Tree, and they are expanding on the rooms end. And like they are expanding around, IHCL is expanding around 15 to 18,000 rooms across the brands in the next 3 to 5 years. And Lemon Tree is expanding around 10,000 rooms in their pipeline. Chalet is coming on a smaller base with around 1.2 thousand rooms, and EIH and SAMHI are expanding on the premium and business leisure locations. If we see on the state-wise allocations around, like the demand grew sharply in the recent past, and there is a rooms needed in the Maharashtra around 45,000, Rajasthan around 43,000, and high tourist locations such as Goa, Uttar Pradesh, Ayodhya and Varanasi being on the religious end, Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala. So this mix is indicating like there is a all like a business travel
a tourist travel, and a religious travel. Like all the three mix are growing on a rapid basis. So for an investor, the takeaway would be like the sector is in an structural upscale, strong demand and outpacing supply is helping pricing power, their margin expansion and earnings visibility. And also the cash flows are on a rich basis. So the sector is good for a medium to long term basis. Yeah. So in that, if I want to sum it up, then as you mentioned that Chalet is coming out 1,200 rooms. Lemon Tree, I think, has the highest pipeline of 10,000 rooms. IHCL has the highest pipeline, sir. You said 15 to 18,000. Correct. Okay. But I think, from a percentage point of view, Lemon Tree would be Lemon Tree will have a highest pipeline. correct. Correct. I think this also now what happens in IHCL majorly they are coming up with the small part if the Ginger, Vivanta and all. So if I'm not sure which are those 18,000 rooms coming up, but now if it's only from the Taj perspective, then it is things to look at because they have Correct. specifically mentioned that it is 4-star and 5-star. There is an issue with the 4-star and 5-star branded Correct, sir. 4-star, 5-star category. So if it's in the Taj, out of that 15,000 room, if it's Taj, then we will be happy. Or else if it's then Ginger or maybe Vivanta or maybe that Amatral, so that is of no use. If actually, so we just have a look at it whenever you get time. That which are the actually rooms which are coming up, keys. Sure, sir. Okay. And Chalet, okay, Chalet is fine. Lemon Tree, okay. 3 company names have only come up, no? Others, I think Vinitev have also. It was not written anywhere about Vinitev. SAMHI Hotels, yesterday I sent about SAMHI Hotels, the initiating report. So it was made by one of my friend's company. So my friend work in that company. They have SAMHI is quite underpenetrated, a small company compared to other, and they are also expanding a lot in this segment. So a company to look. They also have Marriott, Hilton. So probably they have something near the new airport, Noida and New Mumbai, the Hilton part they had mentioned in that report. Others also, guys, go to the report once. It's a very important report from your interview perspective. If you want to talk about tourism sector, a lot of things are written over there, and just see how they have written it. Only data points, nothing much on the writing part. Okay. Yeah, Ashutosh, Nagar, you can continue. Anything to add on? Yeah. So he has covered quite a few points. You can just add on. You can just start. You can again start whatever you think. Yeah. All quickly, right. Yeah. So the government's push to improve destination management comes at a time when tourism demand in India is accelerating. But the quality of hotel supply remains structurally constrained. In 2024, India recorded 2.9 billion domestic tourist visits, which was 17.5% increase year on year, while foreign tourist arrivals crossed 20 million, exceeding pre-pandemic levels. So against this demand, India faces a shortage of 3.8 lakh quality hotel rooms with only 4 lakh rooms in the 4 to 5-star category. This policy shift strongly favors organized players as standards around cleanliness, safety, and destination governance rise. Unorganized accommodation, nearly 16 lakh hotels, will struggle to comply, accelerating a shift towards branded supply. Leading players are already positioning for this opportunity. IHCL is planning to add quite a few thousand rooms. I don't have the exact figure. Lemon Tree is supposed to add 9 to 10,000 rooms. Chalet is they are already expanding with somewhere around 3,000 rooms. And to be precise, EIS they are planning to around 2,100 rooms. It's somewhere around that, largely through asset-light models. So better managed destinations also support longer stays and higher per tourist spend, driving ARR-led RevPAR growth rather than just occupancy. Overall, rising tourism demand, constrained quality supply, and disciplined expansion create strong visibility power for pricing power, earnings growth, and margin expansions for organized hospitality players in the near future. Okay, I think, yeah. So good one, again, good way to present. There is one news again on the FMCG part. So they have come up with an update. Ashutosh Raikar has done that. So Ashutosh, anything on this? Bobby, Yes, Bobby, you sir. can go next after Ashutosh.
So, sir, there was an update that FMCG sales have rebound in October to December quarter, that is second quarter, after a prolonged demand slump. So, consumer demand across FMCG, electronics, and lifestyle products rebounded in this quarter, supported by majorly GST cut, then inflation easing, and improved consumer sentiment after many months of weakness. So I have focused on the FMCG sector because I'm covering it. Coming to Dabur, around two-thirds of the Dabur's portfolio is benefited from GST 2.0. Dabur 66% portfolio is benefited from GST rate, which was previously in the band of 12 to 18%, which is currently set to 5%. So key categories benefited are juices, in which it operates under the brand Real. Then toothpaste, major is Dabur Red toothpaste. Then hair oils, Dabur Amla, and Ayurvedic property under which it operates under 𝗖𝗹𝗹, and Dabur Lal Tel. Also, shampoo variant Vatiga and glucose, that is the Glucon D, is likely to benefit. Then the next company, Tata Consumer, which will also see an uptick post the GST cut. So majorly in the IP, there was given that TCPL's growth businesses, which are Capital Foods, 4% of top line, then Organic India, 2% of sales, and Tata Soulful, which is a small player currently, will benefit from the GST. Then the big guy, Hindustan Unilever, about 40% portfolio would be transitioned by the new GST reforms. In HUL, the beauty and well-being category, which contributes to about 21% of its top line, will be benefited, and which has brands such as Dove, Ponds, which are more than 2,000 crore brands. Then further, Indulekha, Sunsilk, Tresemme, Clinic Plus, in the hair care segment will also benefit. In the HUL's food and nutrition segment, Horlicks, which is a major brand, further Kisan, Nor, and Brew are likely the beneficiaries. And lastly, in the personal care category, Lifebuoy and Lux, which are more than 20 billion plus revenue brands, and peers would have an advantage. The next company, lastly, is the Godrej Consumer Products. So, one-third of GCP's portfolio would have an advantage because of GST. In the personal care category, majorly toilet soaps, under which Synthol is a major brand, which contributes 7% of to the sales, is likely to benefit. Also, some smaller categories in personal care, such as talcum powders, shampoos, and shaving creams, would also benefit. So, sir, as an analyst, I feel that Dabur would be a key beneficiary because 66% of its portfolio is likely to benefit. Also, it has some prominent brands such as Real, which contributes 11% to its top line. Also, Dabur Red toothpaste is there, which contributes 8% to sales. Then Chyawanprash and Honey both contribute approx 8% to sales. So these brands would see a meaningful uplift in demand if the overall FMCG industry demand picks up. Yeah, I think either Dabur is also, the portfolio that you mentioned, it is specifically into rural areas. It is not into urban, because I don't use any of the products of Dabur. So, but yeah, Dabur has a high penetration in rural as well. Beauty and well-being, they have mentioned over here about the HUL that it is not growing as per expected. It was written somewhere over here. Yes, sir. Revenue is flat year on year. Home and personal category experienced gradual disruption and limited restocking. Dabur. Only the home care is growing. Home care is growing, yeah. Home care is growing, but the restocking hasn't happened. So in this again, I will say premium player Marico today. One of our analysts, he has become an analyst now working in Phillip Capital. He was a part of
our morning call, Vignesh, he messaged me in the morning saying that, sir, Marico has hit a lifetime high. So we were, tracking that stock from last 6 months. He was tracking. I was bullish on Tata Consumers. He was bullish on Marico. His reason, XYZ reason. And majorly it was the premium play, which was happening. So currently, if I talk about premium products, only as you rightly mentioned, Ashutosh, Tata Consumer is there on the premium part. Though it contributes only 10% of the portfolio, but it also has 15% coming from the online distribution, 10% coming from approximate the premium product. So 20% of the portfolio is, I will say, firing. And Capital Flow, so Right, they have sir. said that it will grow by 30%. That is their estimation. सर TCPL का भी वो FMCG का रेवेन्यू भी 57% से बढ़ गया है मतलब 57? हाँ, हाँ FMCG जो कंट्रीब्यूट करते हैं FMCG बोल रहा हूँ सॉरी FMCG, क्विक अच्छा, कॉमर्स okay. का क्विक E-commerce कॉमर्स का, okay. ई Okay. कॉमर्स का E-commerce का, yeah. वो एक अच्छा है So yeah, TCPL Tata, में yeah, Tata Consumer is is it, if technically you talk about it, is at the breakout point. मैं नहीं बोल रहा हूँ, but वो कोई technical मुझे बोला, it is at the breakout point. But yeah, you can have a look at that. Okay. Bobby, anything to add on? Nothing much. Only mine is a bit more broad, so I think Yeah, you it's can fine. go now. You can start Okay, whatever things fine, you fine. think that was missed. Huh? Okay, fine. So what I can see is, and there's an estimated 8% year-on-year net sales in Q3 FY26 of all the top FMCG companies, as we can see in the image. And this is why, because the net sales growth was driven by GST, which is understood, but the in percentages term, the retail demand during October and November, the sales rose to 11.5% year-on-year, so making the first double-digit growth in nearly 20 months. And this GST, so in this Q3 FY26 is played out in two phases. So the first phase was early weakness due to the liquidation of higher priced pre-GST inventory. Okay, then after that, in the second phase, which is post mid-November, the what you say, a restocking commenced and lower price stock entered the market. So this led to the growth in the what you say, October, November, and December. And as usual, rural demand continued to outperform the urban markets. Then in Q3, so basically, in Q3, the growth remained healthy. At the same time, brokerages also highlight that the full demand uplift from GST-led price cut is likely to materialize in Q4, supported by the recent tax reform, favorable macro condition, and seasonal tailwinds from lower winter temperatures. Consumer staple sales are expected to stay above trend with growth estimated at 7.8%, well ahead of 8-quarter average of 6.1%. So basically, in order to conclude, I would just say that this is like an inflection phase of the FMCG sector, which is in Q3 FY26, with demand recovery gaining traction. So from the next Q4, like this growth momentum is likely to strengthen. And also, additionally, just to add, the market also had reacted to top FMCG companies yesterday. Like as I showed in the pic, like HUL increased by about 1.5% in price, Marico increased 2.2%, and Patanjali food increased 3%. So if you notice, these are more into consumer staples. So yeah, that is what. Yeah, yesterday FMCG was up, yes. Okay. Yeah. So you have said that it is estimated 7 to 8% growth in Q3 FY26, well ahead of the 8 quarters average. This was of Marico, Yeah. right? Huh. But yeah, that was there in the news only. Like, Yeah, it was there in the news. Yes, correct. that data point was there in the news. Like last line, favorable macro conditions, last paragraph in that it is there. Yeah, so overall, what has happened is I was talking with one of my analyst friend as well. Is happening that FMCG hasn't performed in the last 2 years, probably what is expected to Yes. perform.
We have also seen somewhere in the news article, it was written that the GST transition is taking time because since FMCG is not something, a premium product that suddenly if the price of your, tea falls, so you will go and buy, 5 kilos of tea. It will happen gradually. So I think 26 is the year for FMCG and the tourism. Possibly, I can go wrong on it, but now Marico is at lifetime high. Other companies will follow it, and news are again coming up that GST benefit will come in the Q3 FY26 this quarter probably. So we'll see how. So that is why we have to follow the result season, and you have to make a report on it. So what happens that whenever you make a report, quarterly report on it, the one when you go for when you go for applying any roles, you say that okay, this guy is looking at the sector, he has also followed the company. It should not happen that you only take one company and do a research on it. It should have what is happening in the 4-5 companies. So if you're following FMCG, probably this all company you should follow. And here I said avoid ITC and avoid Nestle because they don't have conference call, but other companies do have conference calls. Even Tata Consumers comes in it. Then Marico is not given in this. It's just spirited comeback expected. Marico has already reached. Marico has already done the comeback, which was expected. Tata Consumers already, and I said it is at the breakout point. These companies, now you have to see which companies will perform over here. So that is why you need to have that conference calls report with you. If asked in interviews, what are you doing from the last 3 months at RK Advisory? You should not say, sir, I made a report. No point. Even I cannot recommend you on that basis. Okay. So Dishank, is there anything on the auto sector? Yes, sir. Yes. Yeah, Dishank. Sir, can I? Yeah, you can go ahead. Yeah. Oh, yes, sir. So, good morning, sir. Good morning. Sir, in today's news, there is a two newly launched compact XUV by Mahindra and Mahindra and the Kia. Mahindra launched the new XUV 7XO in the place of XUV 700, and the Kia Seltos launches facelift model of 2026. Sir, and by comparing its market share, I'm looking at it, the Mahindra has a market share of around 12%. And if we talk about the particular segment, a particular model, overall it has a 1.9 to 2% share. XUV 700, I'm talking about. And if I talk about Kia Seltos, then Kia has a market share of 6%, 5.9 around 6%, and Kia Seltos has a share of 0.8 to 0.9%. So the major reason, that's also from my side. Okay. That's why is this news so short? First of all, why did you choose this news? So auto sector. हाँ, तो क्या था न्यूज में? क्या था? तो अपडेट था ना, लॉन्च किया Yes, उसने. एनालिसिस क्या था इसमें? Sir, wait a minute. सर एनालिसिस ये था कि जो कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो मार्केट है वो सर ईयर ऑन ईयर जो 8 to 10% से वो ग्रो कर रहा है. Okay. और एक्सयूवी का जो मार्केट शेयर है, एक्सयूवी 700 का जो मार्केट शेयर है, सो वो 16%, सॉरी, जो टोटल शेयर है उसके सेल्स में, महिंद्रा के सेल्स में वो 16% है. सर ये एक हाईली इम्पैक्टफुल डाल सकता है इसका न्यू मॉडल जो फेसलिफ्ट मॉडल है 700, जो अपग्रेडेड मॉडल है. इसमें सर बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू द लास्ट मॉडल and the amongst the competitor also. So if Like, I ask you, these are the competitors: Safari, Alcazar, MG yes, Hector Plus, correct? they are the कितने competitors. यूनिट बिकता है ये? कितने यूनिट बिकता है? Sir, मतलब of मिलके? Mahindra sir, or नहीं, सब all. लोग competitors भी, हाँ. Okay, sir. I have written the data, sir. Wait a minute. भाई कितने? टाटा पंच भी, ये इधर टाटा पंच भी तो दिया है, किया भी दिया है. किया Tata भले ये Punch लोग ने is लिखा not, नहीं है, बट किया भी तो competitor है इसका. They have not sir, written it. Mahindra का. नहीं, यहाँ पे किया भी तो इसी का competitor है. उसने भी तो ये इसमें लॉन्च किया है. ये तो वो लोग ने दिया है competitors. सफारी सा हैरियर भी competitor है इसका, XUV का. Yes, sir. वो सब डेटा किधर है?
अपडेट दिया तो फाइन, एसयूवी लॉन्च किया, उसने फीचर्स लॉन्च किया, अभी इसका करूँ क्या मैं? एज एनालिस्ट व्हाट विल आई डू? हाँ लॉन्च किया, सो सर अगर उसकी बात करें कि लास्ट मंथ ये ओवरऑल जो 2025 में XUV 700 ने अप्रॉक्स सर 93,000 यूनिट सोल्ड किए। एक महीने में? नो सर, और 2025 होल ईयर। नहीं महीने का वो तो हाँ ठीक है, ओके 93,000 हो गए, बाकी? एंड सर किया Toyota Safari has sold 20,000 units. Of Harrier has sold 18,958 units in whole year. I'm talking about. And Kia Seltos has sold around 70 to 73,000 units in 2025. Okay. And if we go about the shares of all the particular brands or particular segment, तो सर किया में सेल्टोस का शेयर सबसे ज्यादा है उसके पूरे क्रेटा साल भी में। तो आया, क्रेटा का भी नहीं, क्रेटा भी तो इसी सेगमेंट में। हाँ वेट अ मिनट सर, क्रेटा सर इट्स टोटल क्रेटा का जो सेल्स है मतलब पूरे साल में वो अप्रॉक्स 1,95,000 अराउंड है। नहीं तो ये सब विषय तुमको लिखना है, ये मैं तुमको पूछ रहा हूँ, तुमको पता है, इट्स गुड दैट यू नो, बट दिस यस सर। इसके तो ऑटो सेक्टर हम फॉलो करते हैं ना, ऑटो मोबाइल अपडेट, ये हाँ सब हाँ आता है तो तुमको बताना है कि एसयूवी लीडरशिप, एक्सटेंड लीडर अभी कितना परसेंट है इसका शेयर टोटल, टोटल एसयूवी में कौन से अभी एसयूवी का कौन सा, ये लोग ने देखो कुछ कैटेगरी दी दिया, यूवी टू यस। कैटेगरी, व्हाट इज दिस कैटेगरी? ये यूवी टू कैटेगरी का क्या मतलब होता है? UV2 के वेट अ मिनट सर, मैं ये भी कहीं लिखा हूँ मेरे नोट पे। तुम्हारे आर्टिकल में सब ये सब होना चाहिए ना, सिर्फ अपडेट का क्या करूँ मैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ओके सर। मतलब इट शुड बी एंटायरली दैट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सेक्टर, ठीक है। मार्केट शेयर एसयूवी का लिखा है, Hyundai Creta 2.28, ये XUV 700, अब ये कौन सा, ये लोग ने UV2 का क्या कैटेगरी दिया है ये लोग ने, दैट इज ग्रोन बाय 29%, व्हाट इज दैट कैटेगरी? सर मैं तो मतलब सोचा था लिखने का, लेकिन फिर न्यूज लेटर थोड़ा बहुत बड़ा हो जा रहा था तो फिर मैं नहीं नहीं लिख पाया क्योंकि इसको। बाकी सब तुमने लिखा है वो किसी काम की नहीं है ना, ऐसा है कि यस। तुमको महिंद्रा न्यूज है महिंद्रा की, तो तुम ओके बाकी सब सेल्टॉस वेल्टॉस के बारे में इतना क्यों लिख रहे हो? सर, सेल्टॉस के बारे में इतना, सेल्टोस का भी न्यूज़ है सर, मैं हाँ दूसरे सो उसमें। द न्यूज इज Mahindra launches XUV 700 and Seltos Kia launches new Seltos at यस सर। price, at the price 10 lakh एट to 22 18 lakh, लाख, हाँ 22 और 18 लाख। हाँ ठीक है, हो गया। अभी Seltos facelift price at 10 lakh, offers level 2 ADAS, 21 features, advantage, Kia contributes 28%, तो हाँ ये ठीक है, Seltos contributes 21% of Kia's total sales। अभी Kia is not important, you are talking about Mahindra, Kia तो listed है नहीं ना, यस सर। तो कैटेगरी में हमको बात करना है, फिर किया की इतनी बात क्यों हो रही है? ओ सर, सो मैं आज ही एक्चुअली मेरे को पता चला कि किया वो रजिस्टर स्टॉक में रजिस्टर नहीं है। मेरे को लग रहा था कि क्योंकि वो सब्सिडरी कंपनी हुंडई की तो मे बी वो हो सकता है करके, इसलिए मैं आज मेरे तुमने को जो पता कंपनी चला। के बारे में लिखा है ना, Hyundai Creta contribute 32% ऑफ Hyundai सेल्स, तो पूरे सेगमेंट का कितना कंट्रीब्यूट करता है? बिकॉज सी न्यूज क्या है, एक्सटेंड एसयूवी लीडरशिप, मतलब यस सर। तुमको पता होना कि कितने एसयूवीज बिकते हैं, ठीक है, यस। या मेजर टॉप 5 कौन सा है, ठीक है, सब नहीं बताएंगे तो भी, तो उसमें ओके से सर। इसका शेयर कितना है, कितना था और कितना हो गया है। एंड ओके सर। XUV 7 एंड एक्सेल के बारे में, बिकॉज इट हैज मोर फीचर्स देन अदर्स, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज मोर, ये तुम्हारा एनालिसिस होना चाहिए। जैसे ना ये ट्रिपल स्क्रीन फीचर किसी में नहीं है, यू कैन से दैट सर दिस इज द फर्स्ट सेटअप, फर्स्ट टाइम ऐसा कोई आया है कोई कंपनी में कि इट हैज अ ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, द बेस वेरिएंट ऑनवर्ड्स, यस इट सर आल्सो वो। गेट्स लेवल 2 ADAS एंड एड्रेनाक्स एट दिस प्राइस रेंज, वो भी है उसके बेस वेरिएंट में ही सब आ रहा है। यस सर। सर ये पॉइंट लिखा हो सर, ये ट्रिपल स्क्रीन वेरिएंट ना सर वो क्रेटा के हाई मॉडल्स में ही स्टार्ट हुए हैं, सारे करेक्ट, जो हाँ क्रेटा के हाई मॉडल है उनमें स्टार्ट हुए, बेस वेरिएंट्स में इनमें ये X7O में चालू, 7XO में चालू चालू किया, हाँ। मतलब लॉन्च किया है। तो वो ये न्यूज़ पॉइंट था था ना, सर। दिस इज एन एक्साइटिंग न्यूज़ ना। ओके सर। नहीं सर वो मैं पता था कि वो ट्रिपल स्क्रीन वाला जो वो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ फर्स्ट ऑफ क्रेटा में टॉप्स में लॉन्च हुए, जैसे हाइब्रिड मॉडल में तो। ये सो यू हैव टू बी एंथुसियास्ट व्हाइल टॉकिंग अबाउट दिस न्यूज़ ना, कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महिंद्रा में। अगर खुद ओके भी सर। सी दिस इज अ पर्सनल बेट एज वेल, तुम खुद भी तो गाड़ी लेते हो, तो अगर तुमको गाड़ी भी यस देखना सर। है, तो जो अगर जैसे हम्म। कॉल पहले से भी मुझे गाड़ी लेना है, ठीक है, तो मेरे को समझेगा ना, अरे हाँ ये सब आ रहे हैं, इसमें फीचर्स अलग अलग आ रहे हैं,
तो ये पर्सनल भी बोला ना कि यू हैव टू ब्रिंग इट टू ग्राउंड लेवल पे लेके Okay. आओ कि बात करो कि सर आपको अगर खरीदना है तो आप XUV 700 विल बी अ गुड ऑप्शन, Okay, sir. या whoever तुमको भी फैमिली में किसी ने पूछा कि गाड़ी कौन सी लेनी है, मेरा इतना बजट है 20 लाख तक का, तो यू नो ना कि क्या और क्यों फर्क है दोनों में, Yes, sir. एटलीस्ट ये रीड करके तो, एंड कैटेगरी क्या है, यानी ये सेगमेंट क्यों ग्रो हो रहा है, एंड ये एनालिसिस हो गया फिर एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि UV2 कैटेगरी कितना क्यों 29%, व्हाट इज दिस UV2 कैटेगरी, इसमें कितने कॉम्पिटिटर्स है, भले वो लोग ने सिर्फ लिखा है टाटा सफारी एंड होंडा एल्केजर, तो है ही नहीं इसका कॉम्पिटिटर, मतलब कितना छोटा है वो कंपेयर टू XUV 700। MG हेक्टर प्लस तो ऑलमोस्ट बंद हो गया है, कोई लेते ही नहीं है MG हेक्टर प्लस। हाँ, yes, sir. सफारी काफी बड़ी है, सफारी 7 सीटर है ये भी, पर ये इसके काफी महंगी है सफारी कंपेयर टू दिस प्राइस रेंज। So these all things are important to talk about. Okay, sir. I will Okay. improve it. Okay. Avinash, why have you taken this news on HDFC sir. loan group? Why have you taken this news on HDFC Bank? Yes, sir. I did not get any news on hotel, Yes. so I have picked it. What you did not get? Entire newspaper was on hotel. 3 people got news on hotel. Auto was there. FMCG was there. तुमको क्या नहीं मिला? नहीं तुम्हारे नहीं सामने है ना था न्यूज़पेपर? सर, लेकिन हाँ तुम्हारे सामने ना 3 न्यूज़पेपर खोल के रखा ना मैंने। हाँ सर था, लेकिन मतलब मैंने क्या मतलब है, तुमने जो न्यूज़ लिखा उसका कुछ मतलब ही नहीं है। हाँ वही है, एक चीज मतलब तुमको पूछ गलती लो, हो। HDFC बैंक और ICICI बैंक कितना फर्क है बताओ दोनों के बुक में? नहीं सर, नहीं पता। तो फिर क्या है, LDR क्या होता है बताओ लोगों को? LDR रेशियो इंक्रीजिंग, व्हाट इज LDR? लोन लोन टू डिपॉजिट रेशियो। हाँ, HDFC ICICI का कितना है? नहीं सर, नो आइडिया। तो फिर यस क्या सर, आई पूछने विल की करेक्ट जरूरत माय है? मिस्टेक। यस। किसको देता है HDFC बैंक लोन, इंक्रीजिंग लोन ग्रोथ किसको दिया है लोन बताओ जरा HDFC ने? मेजोरिटी रिटेल सेक्टर को दिया है और कमर्शियल कौन सेक्टर। से रिटेल में किसको? मुझे तो नहीं मिला, मैंने तो नहीं लिया, मैं भी रिटेल ही हूँ। यस सर। व्हाई आर यू राइटिंग दिस न्यूज अननेसेसरी? न्यूज नहीं मिला अविनाश, मेरे 15 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि न्यूज नहीं था न्यूज़पेपर में। तुम्हारे 5 महीने के 15 दिन के करियर में न्यूज नहीं मिलता तुमको? नहीं नहीं, न्यूज था, लेकिन मैंने ये चूज किया, गलती हो, ये मिस्टेक हो गई। हम बोला ना FM, जो प्रोडक्ट्स तुमने लिया है लोन, रिटेल लोन तुमने लिया? नहीं नहीं लेते हो तुम लोन? नहीं सर। ये B2B है, बैंक्स आर B2B तुमको नहीं समझेगा कभी बिजनेस, यू विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन B2B सेगमेंट। ओके सर, ओके। यू शुड नॉट टेक B2B एनी पे, B2C हर एक कंपनी देखना, B2C जो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स बाय कर रहे हैं, बिकॉज वी आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एटलीस्ट हैविंग अ जनरल नॉलेज कि ये प्रोडक्ट्स में फर्क क्या होता है। ओके, I will take care that news should be of day-to-day products and It's the only sector which B2C. we are tracking. Yeah, Yes it's sir, only yes sir, B2C, nothing else. yes Yes. sir, yes, yes. Thank you. And यहाँ सिद्धांत तुमने क्या न्यूज लिखा आज? हाँ सिद्धांत, हाय सर। सर मैंने ITC के ऊपर लिखा था, जो उनका टैक्सेशन 1 फरवरी से होने वाला है, 50% टैक्सेशन हाई करने वाले हैं ना, उसके ऊपर था न्यूज। ये तो कब का हो गया टैक्सेशन है, तो कब का न्यूज है? ये तो 3 दिन हो गए न्यूज को तो। हाँ सर, बट फाइनेंशियल उस वाले फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आज था ये न्यूज। सिद्धांत, तुम एक एनालिस्ट से बात कर रहे हो, ये न्यूज को 10 दिन हो गए आए हुए ITC के, तुम अभी क्यों बता रहे हो मुझे ये न्यूज? अभी क्या अलग आया आज न्यूज़पेपर में? हाँ सर, इसमें बस वही लिखा हुआ था कि मतलब कि उनका 50% टैक्सेशन एक तो वो लगने वाला, और 40% जो पहले GST का था हम्म, वो भी एडिशनल, मतलब उसमें होने वाला था, GST तो टू हो पॉइंट गया टू वाला। स्टॉक उस दिन, स्टॉक 7% नीचे था, न्यूज ट्रैकर नहीं बनाता ना तुम, मार्केट ट्रैकर बनाते नहीं हो ना, इसके लिए यू आर हाँ नॉट अपडेटेड, इसके लिए यू आर नॉट अपडेटेड। 7% गिर के हो गया वो स्टॉक, 200 पे आ गया वो स्टॉक। दिस शोज दैट यू आर नॉट डूइंग थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर मैं तुम्हारा मैनेजर होता तो तुमको आज बहुत गालियां पड़ती तुमको आज, कि ये न्यूज तुम मुझे सुबह सुबह लेके आए हो, जबकि इतने सारे न्यूज छोड़ के, जो भी 10 दिन पहले हो चुका है ये सब।
उस पे कितने कंपनीज के रिपोर्ट भी आ गए। और ऐसा guys see this is the problem if you're not being consistent। तुम ना एक प्रोफेसर के साथ नहीं बात कर रहे हो। आई विल टेल यू अगेन तुम मुझे मत बताओ कि मैंने ये करके भेजा। आई विल हैव 100 फॉलोअप क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे भी पूछे गए थे जब मैं एसोसिएट था। फॉरगेट और एसोसिएट, जब मैं किसी के साथ काम कर रहा था एज एन इंटर्न, तो तुम लिखते हो मेनी ऑफ यू हैव रिटन इंटर्नशिप। गाइस प्लीज रिमूव इट फ्रॉम योर लिंक्डइन कि इंटर्नशिप एट आरके एडवाइजरी। टिल आई डोंट गिव यू हेड्स अप ऑफ यू आर डूइंग समथिंग, रिमूव दैट। कोई मत लिखना। आई हैव सीन मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड राइटिंग इंटर्नशिप एट आरके एडवाइजरी। 15 घंटा अगर इफ यू कैन प्रूव दैट यू आर वर्किंग 15 आवर्स a day, तभी लिखना इंटर्नशिप कर रहे हो। बिकॉज माई फ्रेंड्स आर आस्किंग मी ऋषभ ये लड़का तुम्हारे पास तेरे भीतर काम कर रहा था क्या? नहीं। बिकॉज मार्केट में आई स्टिल पीपल स्टिल नो मी एंड नाउ अपने 50 स्टूडेंट्स प्लेस हुए तो दे और इन द मार्केट, सो अननेसेसरी उनका नाम खराब होगा। सो if you have not written, I will unnecessarily have to post on your tagging you in LinkedIn and post that this guy is doing a fraud। तो जिन्होंने भी किया है निकाल दो टिल आई डोंट गिव एन हेड्स अप कि तुम कुछ काम कर रहे हो। एंड डालना तो मुझे पूछ के डालना कि सर मैं डाले कि हम इंटर्नशिप कर रहे, तो आई विल। एंड इट वाज सेड दैट 3 months इज द ट्रेनिंग एंड उसके बाद इज इंटर्नशिप। 3 months ट्रेनिंग, हाँ, इफ यू कैन प्रूव दैट यू आर एक्चुअली वर्किंग एंड यू आर नॉट टेकिंग इनटू ट्रेनिंग, तुमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है और मे बी यू आर जस्ट अपडेटिंग योर ट्रेनिंग, तो ठीक है। जिसने भी डाला है निकाल देना। आई एम जस्ट गिविंग यू द लास्ट वार्निंग। काफी लोगों का मैंने देखा है कि दे हैव रिटन, सो अननेसेसरी मुझे तुमको टैग करके पोस्ट करना होगा कि दिस गाइज आर ब्लफिंग, कुछ इंटर्नशिप नहीं। आई हैव सीन 6 महीने का इंटर्नशिप डाल के रखा लोगों ने, 6 दिन का काम नहीं करते हो। ओके, सो वार्निंग, जिनको भी देखता है वर्किंग इन आरके एडवाइजरी, स्ट्रेट अवे टैग यू ऑन लिंक्डइन एंड से दैट दिस गाइज इज डूइंग अ फ्रॉड, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ आरके एडवाइजरी। आते नहीं है क्लास में, सिर्फ डाल के रखा है जस्ट टू हैव एन फेक सर्टिफिकेट। Ankita, you want to say something? Ankita, Yes, sir. yeah, anything? Yeah, sir, I did on the same news, the Mahindra one. Okay. So, Okay. should I One present? second, just give a Yeah. 3 pointers. तूने बहुत बड़ा लिखा है अंकिता। अच्छा. 3 point में क्या बोल सकते हैं? 3 paragraphs rather. Okay, so Mahindra has launched the XUV 7XO to like strengthen its position, and priced between 13.6 6 lakhs to 22.47 lakhs, depending on the models. So sir, within 3 क्यों paragraphs, right? क्यों हो रहा है? नहीं तो why I told ना अंकिता, जो तुम न्यूज लिखो ना स्टार्टिंग में ना, मेक श्योर 3 ही पैराग्राफ लिखो, 3 से 4। Okay. डोंट गो टू एक्सप्रेस मोर, ठीक है? अभी बिकॉज यू आर स्टार्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तुम सब नए नए हो, तो सिर्फ 3 पैराग्राफ लिखो। जितना बोल सकते हो उतना ही लिखो, वो पढ़ा तो भी चल जाएगा, तो ऐसा नहीं लगेगा कि तुम पढ़ रहे हो। अभी इतना बड़ा अगर तुम वापस उसको कट शॉर्ट करने जाओगे ना, तुमको लगेगा कि यार, मेरे को भी लगेगा तुमने बहुत लिख दिया, बिकॉज मुझे लग रहा है कि तुमने बहुत कुछ लिख दिया है। Okay. 3 पैराग्राफ, दैट्स इट। 3 9 10 लाइन, दैट्स इट। 10 से 15 लाइन, मतलब वही 3 से 4 पैराग्राफ, जो तुमको लगता है कि मुझे बताना है उतना ही लिखना कल से, ठीक है? Okay, इसमें भी sure, sir. तुमको जो लगता है 1 लाइन हुआ तो भी चल जाएगा कि सर ऐसा ऐसा लिख रहा है। एंड ट्राई टू सिर्फ सिंक, कि इसके बाद महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा की बात करना, किया की बात की तो किया की बात करना, Okay. ठीक है? सर एक और बार ट्राई करें क्या? क्या? Like briefing it in 3 हाँ, paragraphs. correct. Go ahead. Yeah, go ahead. Okay, so Mahindra has launched the XUV 7XO, ranging from 13.66 lakhs to 22.47 lakhs, and it is using low prices and lots of features to attract the buyers, and actually aims to reset the premium compact SUV segment. So XUV offers it is offered in 6 variant with triple screen setup, along with the level 2 ADAS and many more features like Adrenox, which is like digital platform powered by Qualcomm, and it is also available in petrol and diesel. So these are so very like huge amount of features within this price range,
And with this, I can say that it also has grown at 29% CAGR, outpacing the overall SUV markets at 23% CAGR. So driven by the high volumes and अच्छा वन as सेकंड in अंकिता, तो हाँ थर्ड yes पॉइंट, थर्ड जो तुम लोग अभी पेट्रोल डीजल हो गया, अभी ये हाँ ये हाँ अपडेट था, ठीक है, कि ऐसा ऐसा लॉन्च किया है, गुड विद न्यू फीचर्स एक्सेट्रा हम्म, एक्सेट्रा. नाउ व्हेन हम्म, इट इज थर्ड पॉइंट, now तुमने लिखा ना हेडिंग, एक्सयूवी ब्रांड पावर्स पास 50,000 करोड़ एज द यूवी सेगमेंट आउटसाइड हाँ एसयूवी मार्केट. तो इसे लिखने से अच्छा यू कैन से दैट सर द यूवी 2 सेगमेंट शो अ हम्म, शार्प increase in revenue. No, sorry, the okay. UV2 segment has increased by 29% CAGR, outpacing the entire overall SUV market of 23%. अच्छा मतलब हाँ वो हाँ बस हो गया. CAGR को हाईलाइट करना है ना, राइट? हाँ यस यस, हाँ CAGR का अलग है कि वो इंपॉर्टेंट है ना उसमें, क्योंकि ग्रोथ का मैं वही हाँ लिख रहा हूँ. हाँ 50,000 ओके करोड़. ओके फिर लास्ट में लिख सकते हो कि महिंद्रा हैज डन अस रेवेन्यू ऑफ अराउंड 50,000 करोड़ इन द UV2 सेगमेंट. ठीक है, ओके ओके सर तो ये पॉइंट ओके लास्ट में आ गया कि वो फाइनेंस में कभी एब्सोल्यूट नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज ऑलवेज द ओके परसेंटेज इज इम्पोर्टेंट. अच्छा ऐसा, अच्छा तो ठीक है. हाँ हाँ, तो परसेंटेज पहले एंड देन फिर तुम डाल सकते हो एब्सोल्यूट नंबर. एंड फिर ये भी डाल सकते हो प्राइसिंग फॉर एसयूवी इज एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट 40,000 बुकिंग्स ओनली. ओके सर ओके देन सो सर तो फिर इसको लास्ट में जैसे कि कंक्लूड करना है तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, दैट एज एन एनालिस्ट आई थिंक दैट दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर महिंद्रा, लाइक दिस मॉडल और नहीं, इसमें तो अभी तुमको वो बताना है कि कॉम्पिटिटर्स के बारे में, जो कॉम्पिटिटर्स है वो लोग ऐसे फीचर्स दे ही ओके नहीं रहे एंड महिंद्रा दे रहा ओके है. ये तुम्हारा हाँ जैसे मतलब वो कि जो ये मेंशन पॉइंट. किए कि टू मेनी फीचर्स फॉर दिस प्राइस अवेलेबल इन द राइट राइट, मार्केट. हाँ. एंड प्लस तुमने वो ऑटोमोबाइल का भी किया, तुमको पता होना चाहिए कि एसयूवी 700 कितना हाँ बिकता है, हाँ वो कितने बिकते हैं, वो होने चाहिए कि सर ये हाँ इतने हाँ सर बिकते हैं अप्रोक्सीमेट. हाँ एंड इसका मार्केट शेयर कैसे, जैसे मैंने इसको बोला, प्रीवियस इसने बोला था कि इसका मार्केट शेयर कितना है, दिशांक को बोला था कि ओवरऑल एसयूवी का मार्केट शेयर. अभी यूवी 2 सेगमेंट ये लोग ने कुछ दिया, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दैट सेगमेंट, देख लेना एक सर बार. UV2 सेगमेंट है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कार मॉडल के ऊपर, लाइक डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट एंड साइज. तो UV1 भी एक है और UV2 सेगमेंट हाँ वो दो क्या है. है ये? हाँ ये जस्ट हम देखे अभी एक थोड़ा देर सेकंड, पहले. एक सेकंड मैं सो देखता हूँ. UV1 सेक्टर. हाँ सर UV2 segment specifically denotes mid-size and larger utility vehicles. हम्म UV1 is referred to compact sub 4 meter SUVs. हाँ अच्छा हाँ. और ये UV2 is exceeding sub 4 meter, ऐसा है. इंजन कैपेसिटी एक्सीडिंग 150 1000. दिशांक ये याद रखना, UV2 is exceeding 4 meters and यस सर 1500 cc. यस सर ये दिया UV2 सेगमेंट. ऑब्वियसली सर सब यू आया उसमें, क्रेटा आया, सेल्टोस आया, महिंद्रा स्कॉर्पियो भी आया है उसमें. सो ओवरऑल इसमें शेयर कितना है सबका. तो व्हेन यू डू अ रिसर्च, तो इसके लिए वो ऑटोमोबाइल के फाइल्स हमारे पास होने चाहिए कि यस सर जब ये न्यूज़ पढ़ते हो तो जाके देखना यार UV2 सेगमेंट में कितने गाड़ियां बिकती है ओवरऑल, उसमें से महिंद्रा का मार्केट शेयर कितना है. किया ने भी लॉन्च किया है, तो किया, क्योंकि आज का ही न्यूज़ है दोनों कि किया ने भी लॉन्च किया, तो वो भी ऑब्वियसली इट्स अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर टू हिम. हमको पता है ना, एज अ कार एंथुसियास्ट मुझे पता है सफारी इसका कॉम्पिटिटर है ही नहीं. सफारी चालू ही 30 लाख से होती है यस सर एंड उसका सिर्फ डीजल में है. वो भी तुम बोल सकते हो कि ये सिर्फ डीजल में आती है. सफारी हैरियर सिर्फ डीजल में आते हैं. एसयूवी एक्सयूवी 700 पेट्रोल में भी आ रही है, ऐसा है. दैट्स अ गुड थिंग अगेन. तो ये हो गया सब एनालिसिस. सर हाँ हरीशन. सर एक डाउट था हाँ कि जैसे जो ये UV2 और UV3 में भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वेन्यू और मिड साइड अप टू बजट बजट फ्रेंडली एसयूवीज आते हैं. तो यूवी सर थ्री में. UV3 भी एक कॉन्सेप्ट है. यस सर. उसमें होंडा वेन्यू, टाटा नेक्सन, ये सारे आते हैं सर उसमें. नहीं, ये तो प्राइस पॉइंट है ना. पता नहीं, मैं अभी जस्ट एआई नहीं, को पूछ रहा था. वन सेकेंड. हाँ. UV3 सी, UV1 छोटे हो गए. UV1 इज जो तुम बोल रहे हो वो सेगमेंट है, नो कॉम्पैक्ट सर, एसयूवी. UV1 इज अ प्रीमियम एसयूवी, जैसे कि MG ग्लॉस्टर्स, टोयोटा फॉर्च्यूनर, ये सारे UV1 सेगमेंट्स में आते हैं. अब सेकंड UV1 इन, पता नहीं मुझे क्या है एग्जैक्टली लोगों ने क्या डिफाइन किया है. नहीं वो UV3 है वो एक्चुअली. UV3 होगा, हाँ वही. मैं UV1 भी एक मिनट में चेक कर लेता कि यहाँ पे देखा ना, टाटा पंच, ब्रीजा, सब अभी मैंने देखा. हूँ. ओके सर, तो मिसमैच. तो सर मेरा ये मेजर डाउट ये था हाँ कि सर जैसे पहले जो
1.5 to 1.6 लीटर के बीच में जो गाड़ियां आती थी उनकी जो सीसी रहती थी सर वो 1500 से प्लस रहती थी। लेकिन अभी जो उस लेवल की जो गाड़ियां हैं सर, जैसे कि एग्जांपल वरना को ही ले लेते हैं सर, मेरे पास वरना थी तो वो सर अप्रोक्स 158 सीसी की गाड़ी थी। लेकिन अभी जो वर्नाज आ रही हैं सर वो 1500 से कम है, लाइक 1480 1491 ऐसे में और वरना सर तो वो। सीडन है ना। हाँ, तो वो सीडैन में है, तो सर मैं ये बोल रहा हूँ तो वो जो कैटेगरी वो चेंजेस उतना इम्पैक्ट करेगी सर वो। नहीं नहीं, ये ना खुद कंपनी वाले ही बनाते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक हम्म। किसी ने बनाया नहीं है, वो खुद उनका उनका क्या कहना है, उन्होंने डिफरेंस अभी एसयूवी जो बात करें सब सब एसयूवीज है ना। यस तो वैसे यूजुअली कॉम्पैक्ट एसयूवीज बोलते हैं, एक कॉम्पैक्ट एसयूवीज होता है, फिर एक मिड साइज एसयूवी होता है, एक लार्ज एसयूवी होता है, ऐसे तीन डिफाइंड है। तो कॉम्पैक्ट मतलब सब 4 मीटर, ब्रीजा और वो सब, ब्रीजा पंच जो भी है। उसके बाद तुम्हारे मिड साइज में क्रेटा आती है, क्रेटा सेल्टॉस जो 1.5 लीटर के ऊपर है। और तुम्हारे लार्ज एसयूवीज में यूजुअली 3 रोज वाले एसयूवीज होते हैं ना, वो आते हैं, ऐसा है। यस। अभी ओके। एक्सयूवी 300 3 रोज ही है, बट वो प्राइस रेंज भी कम है ना, ये है प्लस पॉइंट है कि आनी चाहिए वो लार्ज एसयूवी में, बट उसके प्राइस पॉइंट के वजह से वो रेंज में आती है। मतलब एक क्रेटा तुम 20 लाख की लो, जिसमें सिर्फ 5 सीटर है, बट एक एसयूवी जो 20 लाख के उसमें एक्सयूवी 700, उसमें 3 सीटर है। 7 सीटर। हाँ 7 सीटर है वो, सॉरी 3 रोज है। तो वो यस एक नो इट्स अ प्राइस पॉइंट जहाँ पे महिंद्रा खेल रहा है। यस तो इसके लिए मैं बोला ना कि कॉम्पैक्ट अगर देखा कि क्रेटा दिखने के गाड़ी के हिसाब से तो कॉम्पिटिटर है नहीं उसका, क्रेटा का, यस क्योंकि क्रेटा छोटी है, बट यस एक्सयूवी वही प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है ना, ऐसा है। तो कॉम्पिटिटर ही हो गया उसका। इसके लिए ना सफारी सफारी चालू ही 30 लाख से होती है, मतलब 25 लाख से चालू होती यस है उसकी, तो वो कॉम्पिटिटर है ही नहीं उसका। बट इतनी सस्ती मिल रही है तुमको, सफारी जैसी गाड़ी सस्ते में मिल रहा है, तो सफारी का भी कॉम्पिटिशन हो ही गया वो, ऐसा है। सर, तो जो अभी न्यूली लॉन्च जो टाटा सियारा है हाँ सर, अगर हैरियर और एज कम्पेयर टू टाटा सियारा को देखें तो टाटा सियारा थोड़ी छोटी लगती है सर। छोटी, लेकिन हाँ वो, छोटी है हाँ। हाँ, वो साइज भी वाइज उसका भी थोड़ी यही छोटी। प्राइस रेंज है, यही प्राइस रेंज है उसका भी। हाँ, वो अप्रोक्स सर 11.5 12 लाख से कुछ हाँ चालू है यही वो। प्राइस रेंज में आ रही है वो, तो ऐसा सर है। वो अगर प्राइस रेंज के हिसाब से अगर कॉम्पिटिटर डिफाइन करे तो वो इन्हीं कॉम्पिटिटर्स में आएगा ना सर। तीनों कंप्यूटर, हाँ एक्चुअली प्राइस प्रैक्टिकली प्राइस, क्योंकि हम बायर्स किस पे जाते हैं, तुम तो UV1 UV2 देख के जाते हो क्या लेने को, कि नहीं मुझे नो, UV1 की लेनी है, मुझे UV2 की लेनी है, नहीं ना। जनरली प्राइस सर। प्राइस रेंज तो वो सब आ गए ना कंप्यूटर, तो सब तो तुम एनालिसिस क्या करते हो ना उस पे होता है, ये सब वो लोग ने दिया UV1 UV2। अभी सिंह वो पेपर में लिखा था, इसके लिए मैंने पूछा UV2 क्या होता है। यस सर। बाकी ऐसा तो है ही नहीं, UV2 जरूरी नहीं कि UV2 के सब कंप्यूटर, तुमको तुमको बताना है कि सर देखो सर ये क्रेटा टाटा सफारी लोग ने लिखा तो है, बट वो कंप्यूटर है नहीं उसका, 30 लाख की आती है, यस सर। ऐसा है। और ओके ऐसी सर। बात है तो फिर BMW X1 भी तो एक्सयूवी है, उसको भी कॉम्पीट नहीं कर रहे, वो भी तो आई, साइज की वो बात की सर, है ना। और प्राइस रेंज के देखे तो बहुत हाँ तो पार हो अगर जाती है सर वो। तो है ना, अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात की तो BMW की जो है मर्सिडीज की है, वो भी तो कॉम्पैक्ट में आती है एसयूवी, तो उसको यस क्यों नहीं सर। लिया तुमने यहाँ पे। एंड देन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू प्राइस, यस सर। ऐसा है। तो वो प्राइस रेंज में इतने फीचर्स मिल रहे हैं जो बाकी गाड़ियां नहीं दे रही है। यस सर। तो हमारा है कि कितनी बिकती है एसयूवी, तो इसके लिए एसयूवी, हाँ अभी हम वो सब 4 मीटर के ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि सब 4 मीटर काफी छोटी हो गई, वो कॉम्पैक्ट यस। कॉम्पैक्ट हो गई वो तो। यस सर। तो हम मिड साइज की बात करें, मिड साइज जितने भी जो क्रेटा के रेंज के है, सेल्टॉस के रेंज के, वो सब इसके कॉम्पिटिटर हो गए, किधर ना किधर तो फिट होता ही है वो कॉम्पिटिशन, ऐसा है। तो उसमें ये भी आ गए, तुम्हारी अर्टिगा भी आ गई, बट अर्टिगा सस्ती आती है काफी, अर्टिगा यहाँ पे खत्म हो जाती है 13 लाख तक। और ये ना एक्चुअली एक शोरूम प्राइस है, ये तुम एक तो शोरूम के सर बाद जीएसटी लगता ही लगता है, तो ये ऑलमोस्ट 13 लाख जीएसटी की गाड़ी आरटीओ। 18 लाख की हो जाती है वो, ऐसा है। यस। तो ये भी 22 लाख की जो है वो 30 लाख की हो ही जाएगी महिंद्रा एक्सयूवी। तो ऐसा है। अभी अभी उसने क्या कहना था कि बेस वेरिएंट में भी इतने सब फीचर्स आ रहे हैं, तो देख लेना यस। कभी, ये 13 लाख ना, ये ऑन रोड आते आते ऑलमोस्ट 4-5 लाख और बढ़ जाते हैं, कि इस पे तो यस। 18% जीएसटी लगेगा सीधा। कितना हो गया अभी जीएसटी, इज इट एसयूवीज को 28% तो जीएसटी था इस पे सीधा जीएसटी आ जाएगा ना सीधा, थर्टीन यस। पॉइंट सिक्स सिक्स पे इफ आई टेक अराउंड 20% भी जीएसटी, 16 लाख, फिर वो रोड टैक्स ये वो मिला के 20 लाख का तो वेरिएंट आ ही जाती है। यस सर। Okay, guys, so we'll wrap it up today. I have a call to attend. Ashutosh, you can call me. Raikar, you can call me after the call. Okay. Hello, sir. Bharat Kumar here.
Okay, sir. No. Yes, Bharat. Sir, I have shared your Excel sheet. Can you please check it? If it is okay, I will go on company and prepare the company profile. What is the sheet Hot about? industry data of hotel industry, sir. Excel is fine. See, Bharat, Excel is fine. Reports are important because Okay. if you write report, I will understand your Excel is good. If you're not writing a report, how will I judge your Excel? If data डाला है तो Oh, obviously in Excel your formatting is important. Okay. okay, sir. What you do with that data is what I require. Now, when you wrote all these things, now what? Correct, it is good. Now, what will I judge in this? मुझे थोड़ी पता है तुमने बराबर डाला है कि नहीं. Correct. Yes, sir. Now I want a report on this. कि तुमने डाला है, that's good. What have you analyzed from this? Because the Yes, sir. reports that you write, how are you supposed to write the report from the Excel? Okay. There is Okay, no sir. there is no wrong in this. So, अच्छा ही है, you know. I will see the formatting. That's perfect. Okay. So you have to present this. Now if I tell you Bharat present this, क्या present करोगे? Okay, sir. I'll prepare the company profiles and share company it to profile, you, sir. that will be helpful. This is good. I mean, good one that you have done. Okay. Yes. Okay. Fine. Sir, I have a query. Hello. Hello. Yeah, Darshil. Yeah. Yeah, sir. Yesterday, actually, I was making a changes in my report. So, as you said, to do segment-wise report, right? So, my auto-funded domestic sales and my I have taken from the press release. The numbers are not matching. So, what should I do? What is the difference? Like 6 to 7,000 units. The 6 to difference. 7,000 units. Okay. 6 to 7. Which company is not matching? I'm not sure which company. I did the total of the all the listed company for the domestic sales and also with No, took but the same for the yeah which year you are doing? Which month you are doing? Sorry. for November 25. November. You are saying the press release domestic numbers and the auto-funded Auto domestic numbers are is not matching. yeah. No, it should not happen. They usually match. Sir, this What happened in the Maruti Suzuki. Actually, sir, they sell it na sell to OEM. So that's the difference only sales in to this OEM. Maruti So that Suzuki. is not considered to be Well, domestic. yes, Rishul. only in the Maruti Suzuki. Okay, sir, got it. It will not happen for every companies. Few companies will happen. Okay. Okay. Yeah. And sir, I have also covered the news on Mahindra only today. Acha. You told, no? No. You didn't raise your hand. You raised it now. Okay. Okay, fine. I think it's same, ना कुछ. Yeah, नहीं same ही है mostly. Yes. हाँ, तो वही है, तुम लोगों कि उसमें डेटा इंपॉर्टेंट है कि वो न्यूज़ में you have to give me the data कि कितना मार्केट शेयर है, क्या है. यस सर, वो मैंने मेंशन किया है आज, मतलब प्रॉपर डेटा पॉइंट्स वगैरह. SUV-led 38%. महिंद्रा हैज. अच्छा तुम्हें इतना लेट, अच्छा सॉरी मैं अभी देखा तुम्हारा न्यूज़. महिंद्रा होल्ड्स 38% मार्केट शेयर इन SUV सेगमेंट. नहीं, महिंद्रा नहीं, उसके कॉम्पिटिटर्स का. सर हाउ मच इज सेलिंग? ओके सर, ओके. विल डू. व्हाट इज 38%? अभी ये अच्छा है बुरा है? 38 पहले कितना था? अभी ओके. कितना? अच्छा समझ. हाँ. और 38% अभी ये सबसे ज्यादा है या हाईएस्ट है, या इसके आगे भी कोई है, आसपास कोई है ऐसा? ओके, गॉट इट. या थैंक यू सर. वेलकम. ओके गाइस, थैंक यू. यू विल सी टुमारो अगेन. गाइस शाम को ना वो मार्केट ट्रैकर बनाना प्लीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द पॉइंट, इतना मूवमेंट हो रहा है मार्केट में, आई वांट मार्केट ट्रैकर खुद करके मुझे भेज दो कि क्या हो रहा है मार्केट में. बिकॉज सी आई एम हैविंग अ ट्रैक, आई एम नॉट एन एनालिस्ट, फिर भी मैं ट्रैक पे हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. व्हाई यू गाइस आर नॉट देयर? तो तुम इतना न्यूज लिखते हो, न्यूज बोलते हो, तो स्टॉक प्राइस पता तो होना चाहिए क्या चल रहा है स्टॉक में, बढ़ रहा है कम हो रहा है. होटल इंडस्ट्री है, आई हैव टोल्ड यू अबाउट इंडेक्स. तो इंडेक्स में क्या हो रहा है, यू कैन क्रिएट योर ओन इंडेक्स एज वेल ना. 5-6 कंपनीज ले लो जो हम ट्रैक कर रहे हैं होटल में, जितने भी है लिस्टेड कंपनीज, यू कैन टेक इट एज अ लिस्टेड कंपनीज एंड यू कैन मेक, सर आज ऑटो में ये हुआ, आज FMCG में ये हुआ, होटल इंडस्ट्री में ये हुआ. आई डोंट गेट रिप्लाईज फ्रॉम यू गाइस. व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? आना चाहिए ना हर एक. Sir, हाँ ओम. sir, I make a market tracker, Hmm. but
if there is any significant change in any stock, then I go to Google and check what's happening. But I've not found any change like article about the change in the stock price. So No, like even if it's significant. no. So what you do is, if it's a significant change, na, you can just mention it that was a change. Price is a this is what is it? News is NA. You can write not applicable or maybe not available as of now. Okay. But you have to mention ना कि change हुआ है. Because as an analyst, अगर मैं तुम्हारा manager हूँ, sometime it happens that probably you might not get it. होता है कभी कभी. News comes late या पहले ही कुछ आया होगा जो उसका रिएक्शन अभी हो रहा है. ऐसे भी हो सकता है. डिस्काउंट हुआ है. हाँ, ऐसे भी हो सकता है. या फिर कुछ आने वाला है, या sometime it is about not about the stock, it is about the sector भी होता है कि सेक्टर में ही कुछ प्रॉब्लम हो गया. अभी लेट्स से वो वेनेजुएला यूएस अटैक्ड वेनेजुएला, सो उसमें भी थोड़े बहुत इंपैक्ट हो सकते हैं. कुछ तो न्यूज होगा व्हिच हैज इंपैक्टेड दैट स्टॉक, बट द सिग्निफिकेंट चेंज है तो यू हैव टू मेंशन दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन दिस. ऐसा. ओके. तो सर मार्केट ट्रैकर तो वो एक्सेल में जाएगा, तो उसके नीचे अलग से टेक्स्ट वी हैव टू मेक कि लाइक दिस इज बेसिक हैपेंड. टेक्स्ट. या बेसिक टेक्स्ट दैट आइशर मोटर इज अप 2%. आइशर मोटर इज अप 2%, जैसे तुमने लिखा है कल, आइशर मोटर इज अप 2%. अभी ये टीआई इंडस्ट्री थी कि हम वी आर नॉट ट्रैकिंग इट. And then if you talk about tourism, lemon tree was down 2%. Devyani 5%. अभी Devyani 5% क्यों नीचे था? बिकॉज वो मर्जर हुआ था. वो न्यूज कब का था? कल कुछ नहीं हुआ था स्पेसिफिकली. वो उसके पहले का था वो न्यूज. कल कुछ नहीं था न्यूज़पेपर में देवयानी के बारे में. विंतीव क्यों था 2% अप? सो इज इट समथिंग इन द होटल्स इंडस्ट्री या कोई सेक्टर में ऐसा कुछ चेंज हुआ है? या कभी कभी ऐसा होता है कि देयर इज जस्ट अ बाइंग, कोई बाइंग हुआ है. या टेक्निकली हाँ, टेक्निकली बाइंग होता है, ऐसा भी होता है. या फिर किसी बड़े प्लेयर ने बाई किया तभी भी स्टॉक बढ़ता है घटता है, ये सब भी होता है. ब्लॉक डील्स होते हैं. ब्लॉक डील्स ना तुम यहाँ पे देख सकते हो. अभी विनितिव, व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, जैसे विनितिव कल बढ़ा ना 2%, तो न्यूज नहीं था उसके बारे में कुछ. सो विनितिव हॉस्पिटल, यू कैन ऑलवेज चेक बल्क एंड ब्लॉक डील्स कुछ हुआ है क्या. अभी तो कुछ हुआ नहीं है. चलिए, तो कल का था ना, तो यू कैन. सर आर्टिकल नहीं होगा तो भी वी कैन फाइंड हियर इफ देयर इज एनी चेंज, क्यों हुआ है चेंज. यस यस. गॉट इट. Okay, guys, sorry, I'm getting a call. Okay. See you tomorrow, guys. See you. Bye-bye. Bye, guys. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Hello.